Everyone loves it when their phone or computer gets a software update. लगता है जैसे कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिल गया उसी टाइम पे, लेकिन सेम टाइम पे whenever there is an update in any type of policy, especially security या privacy policy, तब तो बड़ा डर लगता है, सबको पैनिक हो जाता है, एवरीबडी गोस नट्स। रिसेंटली मेटा स्लैश फेसबुक ने अपडेट किया अपना प्राइवेसी पॉलिसी और बड़ी कंफ्यूजन है अराउंड इट, इतने सारे क्वेश्चंस इन एवरीबडीज माइंड। इनफैक्ट मेरा जो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इट्स फ्लडेड विद मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दिस पॉलिसी। लोग पूछ रहे हैं, इज दिस लाइक द व्हाट्सएप वन, व्हाई डू दे हैव अ न्यू वन नाउ, व्हाट इफ आई डोंट एक्सेप्ट इट, विल माय फेसबुक एक्सपीरियंस चेंज, विल आई नॉट गेट एक्सेस टू ऑल द फीचर्स आई यूज, व्हाट इफ आई डू एक्सेप्ट इट, फिर क्या होगा? Many more questions. So let's address them one by one. Let's start with the most basic one. What is a privacy policy और उसका क्या यूज होता है? Super simple terms में it is a set of rules जो एक कंपनी बोलता है हम ये फॉलो करेंगे to make sure आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप वहाँ पे डाल रहे हैं, it is not misused. आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ मैसेज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, किसके साथ आपने फोटो खींची, किसके साथ आपने फोटो वहाँ पे लगाई, ये सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी लाइफ है उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, दैट इज व्हाट मेटा हैज टू फॉलो एंड दे वांट टू टेल यू दोज रूल्स। यूजर डेटा को कैसे और कितना यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी तो अब हम सबको समझ आ गई, बट व्हाई आर दे अपडेटिंग इट राइट नाउ? उनके पहले रूल्स नहीं थे क्या? थे। मेटा कहता दे टुक अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स, फ्रॉम प्राइवेसी एक्सपर्ट्स, फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, और उन्होंने रीराइट किया अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को टू मेक श्योर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। इनफैक्ट दे मेड इट दैट इजी टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू 11 इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि जो भी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, वेल you can read it in that and understand the simple explanation. That, I think, is the first time some company has done this. अगला सवाल, when will this new policy go into action? ये बहुत easy है, 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा, but a lot of you are already getting notifications from the 26th of May. मेरे पास भी Instagram पे notification आया था, मैंने कुछ नहीं किया अभी, because I'll make up my mind when I want to, and if I don't want to, I can carry on. You know why? क्योंकि I can choose to not agree with this new privacy policy, to not accept it. This is the really big thing, something I haven't seen others do. India को उन्होंने बहुत special privileges दिए हैं to not agree to the new terms and conditions if you don't want to. है ना कमाल? It's quite rare that us in this country gets this very special type of treatment. But what's not rare is to find good tech content on this channel. So subscribe करिए and don't forget to share this video. This is an important one. Now, what if you do not agree? क्या चेंज होगा? क्या आपको कुछ लूज आउट करते हैं? आर यू लूजिंग आउट इन द फीचर्स यू आर यूजिंग? डू यू गेट लेसर फीचर्स नाउ और इन द फ्यूचर? क्या आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा? विल यू नॉट बी एबल टू डू द काइंड ऑफ थिंग्स यू वर डूइंग विद फ्रेंड्स एंड अदर कॉलीग्स? एक्चुअली none of that. आप जो अभी कर रहे हैं, it remains the same. One more question that can arise in everybody's mind is that does Meta have more rights now to access your data or use it very differently? Well, the one word answer is, according to Meta, no, absolutely not. उनका goal with this update is not to change things around, but to be clear about their data practices in a language जो है बहुत simple and easy to understand for all users, ताकि they can build personalized experiences that provide value to you. अगला question, ये नया privacy center area क्या है? That's confusing. Well, actually no, that's an interesting one. Privacy Center will be the new hub for all user queries related to privacy, data collection, and how the data is being used by Meta. Privacy Center is now available to everyone जो Facebook use करता है on their desktop or their mobile. तो ये थे main questions that were confusing everybody. मेरी mind reading तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन in case I've missed on any question, then please put them in the comment section down below. I promise to answer all of you, and of course, subscribe to my channel. Lots more very informative coverage coming up just like this.